Yes. Hello everyone, I'm Teamunsarkari, and today we are starting the chapter of fundamental rights, where we will study about the important fundamental rights which are enshrined in the Indian Constitution in part third. So Indian Constitution का part third mention करता है fundamental rights को, जो कि represent करते हैं political democracy. Political democracy जहाँ पर political representation, political power, politics किस तरीके से लोगों के लिए काम करेगी, उस चीज का यहाँ पर मेंशन किया गया द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इससे पहले कि हम फंडामेंटल राइट्स के असली स्वरूप को देखें, हमें पहले ये समझना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले राइट्स आर दी बेनिफिट्स ऑफ योर सिटीजनशिप। आप कहीं के भी नागरिक होते हैं तो आपको राइट्स दिए जाते हैं। जब हम बात करते हैं प्रिमिटिव सोसाइटीज की, तो वहां पर राइट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि सब जो थे वो सॉवरेन थे, सब अपने आप में सुप्रीम थे, जिसको जो करना है करो। लेकिन राइट्स जो है वो आप किसी से मांगते हैं, और वो उसका नाम होता है आप स्टेट, आप गवर्नमेंट, आप अपनी कंट्री से राइट्स मांगते हैं। और वो कंट्री आपको राइट तब देती है जब आप उसके सिटीजन होते हैं, जब आप उस स्टेट के प्रति अपना दायित्व, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वाह करते हैं। जब आपको राइट्स दिए जाते हैं, आपको राइट्स पर इंजॉयमेंट करने का अधिकार होता है। और अगर आप सरकार जिसने आपको राइट्स दिए वो ही आपके राइट्स का हनन करे, तो आपको अपने राइट्स बचाने के लिए एक जुडिशियल मैकेनिज्म भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स होता है। तो ये तो हुए राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। तो जब हम बात करते हैं वेस्टर्न सोसाइटीज की, जहां पर पहले मॉडर्निटी आई, जहां पर पहले रिनेसा आया, जहां पर पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड डेवलपमेंट आई, वहां पर जो फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, तो वहां पर बात हुई सबसे पहले कि फंडामेंटल राइट्स क्या, ऐसे कुछ राइट्स हैं एक इंडिविजुअल के पास जिनको फंडामेंटल बोला जाएगा। तो बात हुई कि राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, खाली यही दो चीजें हैं कि जिनको फंडामेंटल बनाया गया। अब प्रॉपर्टी का, वहां पर प्रॉपर्टी में जमीनी प्रॉपर्टी भी आ गई, आपकी फैमिली को भी प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आप सब कुछ प्रॉपर्टी है आपकी। उसके बाद बात होती है थोड़े समय के बाद कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर और क्या आ सकता है। तो बात आती है राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू सोशो इकोनॉमिक राइट। तो फिर हम बाद में देखते हैं कि राइट टू डिग्निटी, कि आप डिग्निटी भी और उसके साथ ही पूरा कर सकते हो। तो धीरे धीरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। जब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन जो चार्टर है राइट्स का, वहां भी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि दे आर द फंडामेंटल राइट्स which are providing the limelight to the every nation of the world to provide fundamental rights under their jurisdiction. जब हम बात करते हैं, I have a question कि जब फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स आर ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल्स वेलफेयर, हम बोल सकते हैं कि एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी की भी कोई फंडामेंटल राइट्स की बात है, या ऑर्गेनाइजेशंस की कोई फंडामेंटल राइट्स है? I'll come on that one. Okay. So fundamental rights we were talking about. So the United States Charter, हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जिसको बोला जाता है the one of the largest, not the largest, but one of the oldest democracy of the world. We have a beautiful charter of fundamental rights, which also inspired various colonized countries when they came out of the colonial picture and they tried to get influence from across the constitutions of the world, and India obviously was one among them. जब हम बात करते हैं हमारे B.R. अम्बेडकर जी की, जिन्होंने अक्रॉस द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी और ड्राफ्ट में उन चीजों को इनकॉर्पोरेट किया। So fundamental rights are those rights which are fundamental, which are very crucial, important for one individual to live their life. There are distinctions between rights. One is a natural right and one is fundamental right. Natural rights are those rights which are given to us by nature. There is no authority, there is no government which provides us those rights. Let's suppose we want to breathe. This is my natural right. I want to dance. This is my natural right. I want to do anything. That is my natural right. But these natural rights cannot become fundamental rights in whole. The reason being that fundamental rights are those rights
which are though coming from the natural rights, but they are fundamental, which simply means that all natural rights are not fundamental rights, but fundamental rights are natural rights as well as fundamental. जब हम बात करते हैं नेचुरल राइट्स पे, तो नेचुरल राइट्स अगर हर किसी को दे दिए जाएं तो दैट विल क्रिएट स्टेट ऑफ जंगल. हर किसी को हर कुछ चीज करने का अधिकार है, हर कोई आदमी अपने आप में सॉवरेन. लेकिन फंडामेंटल राइट्स ये कहते हैं कि कुछ ऐसे राइट्स हैं नेचुरल राइट्स के अंदर जो आपको दिए जा रहे हैं ताकि आपकी जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके, ना कोई इंडिविजुअल आपको हर्ट कर सके, ना कोई एसोसिएशन आपको हर्ट कर सके, और ना गवर्नमेंट ही आपको हर्ट कर सके. ऐसे राइट्स आपको दिए जा रहे हैं जो कहलाएंगे फंडामेंटल, जिनके बिना आपकी जिंदगी. कैन आई स्पीक Mansi once? I give the option to ask that question. So all those rights which are given to individuals, they will be considered as fundamental. So natural rights ही fundamental rights होंगे, ये कहना गलत है. Natural rights के कुछ rights fundamental होते हैं. So I am giving the clear definition here that every natural right is not a fundamental right, but every fundamental right is a natural right. यानी fundamental right के अंदर जितने हैं वो तो natural हैं, लेकिन natural right के अंदर जितने हैं वो सारे के सारे fundamental right नहीं हैं. So till now I've demarcated this division. And one more thing I want to add, that why all natural rights are not fundamental rights. The simple reason, my friend is also there who is studying the political science theory. He may shed some light on the thing which I'm going to speak, that positive and negative liberty. In the natural rights category, if you will enjoy every form of right, so those are considered as negative liberty, the signs of negative liberty, which simply means that if someone is saying you something, you can kill that person and there will be no challenge on your power. He can also kill you, you can also kill him. So those rights, every natural right, if will be entertained, they will lead to state of jungle raj, state of chaos. But in fundamental rights, those rights are mentioned. Yeah, let me just give you the last one line. In the fundamental rights, only those rights are there which can ensure that you live peacefully with your co-partner, and they are signifying the idea of positive liberty. Yes, Ashok and Mansi, you please continue. In a single line, positive liberty and negative liberty. Negative liberty is limited because it does not put any reasonable restriction on the individual liberty. And आपका जो individual liberty है, it harms the societal liberty. That is why it is negative liberty. Positive, there is a reasonable restriction according to the constitutional morality, constitutional provision on the liberty. That is why it is positive liberty. So it is broad in a simple definition. Continue, Pravesh. No, actually, okay, I want to make one statement ki when we talk about one small difference between natural rights and the fundamental rights, we can say natural rights do not have reasonable restrictions, but fundamental rights have. Can we say this, Pravesh? Yes. Okay, and I have next question is that can you give one example when you said that all fundamental rights are part of natural rights? So can you provide one example on this? Okay. Right to live. Right, let's give the very simple example. Right to have alcohol and right to have any sort of wine. Is it a part of my fundamental right under Article 21 or not? It is, but provided I drink within my personal space. I do not go in public and have the cigarette and shed the smoke on someone else's face. If I do that, that is my natural right. I can do that. I have the potential. But that will not be considered as fundamental right. I have a very simple example, Pravesh. Yes. Right to property हो सकता है, natural right. Owning a property in a country, it is not a fundamental right. It is a natural right. बोल सकते हैं according to you. Yes, right तभी to इसका property. बोल सकते. तो natural right के अंदर में आ जाएगा जो fundamental right नहीं है. So hope we have. Yes. Okay, we can move forward. So now we are talking exactly about the fundamental rights which are available to us in the Constitution of India.
So fundamental rights are mentioned in Part 3 of Indian Constitution, and the basis comes from the Motilal Nehru report of 1928, which very first time mentioned that what are some important rights which every Indian should entertain, which every Indian should possess so as to live his life in a healthy environment. तो पहली बार जब हमने बात की फंडामेंटल राइट्स की तो 1928 मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट में इसका मेंशन आया. देन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास हुआ by Pandit Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly, that also laid the foundation of fundamental rights chapter in the Indian Constitution. And finally, जब ड्राफ्ट हमारा बनकर तैयार हुआ तो हमारे यहाँ पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पूरा एक जो है ताना बाना फंडामेंटल राइट्स आया विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन प्रोविजंस जो इंश्योर करते हैं कि पब्लिक मोरालिटी, लॉ ऑर्डर, सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, यूनिटी, इंटेग्रिटी, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी मेंटेन रहे जब आप अपने फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज करते हैं. और जो सोसाइटी है, जैसा कि अभी हमने हमारे पूछा गया, तो सोसाइटी के भी इंटरेस्ट और इंडिविजुअल के भी इंटरेस्ट दोनों के बीच में को हार्मनी हो, उस चीज को इंश्योर करने के लिए हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट दिए गए. तो पहला यहाँ पर लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट क्यों दिए जाए. हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यानी विजडम. हर किसी को ये महसूस होना चाहिए कि जो मेरे राइट्स हैं उनसे मुझे खुशी मिलती है. अगर मैं उनको नहीं इंजॉय कर पा रहा या उनके ऊपर कोई रिस्ट्रेंट लग रहा है तो मेरी हैप्पीनेस चली गई. तो फंडामेंटल राइट्स इतने सेक्रेट होते हैं कि उनकी आपकी हैप्पीनेस उससे लिंक होती है. देन सोसाइटी और इंडिविजुअल लिबर्टीज के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है उसको सॉल्व करते हैं. स्टेट की टायरनी. अब स्टेट दो तरीके से टायरनी कर सकता है आपके ऊपर. एक तो लेजिस्लेटिव आर्बिट्रेरीनेस और एक एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस. वो ऐसा कोई कानून बना दे जिससे कि आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन दे तो स्टेट की टायरनी. वो ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर इंप्लीमेंट कर दे तो आपको स्टेट टायरनी के अंडर तो आपका फंडामेंटल राइट्स हनन हो गया. Then modernizing the society and preserving the democracy. तो fundamental rights helps in modernizing the society. जब हम बात करते हैं adultery की, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 377 को नलिफाइड करके होमोसेक्सुअलिटी को अलाउ करने की, जब हम बात करते हैं वुमेन को एंटरिंग देने की इन द रिलीजियस प्लेसेस वेयर दे वर नॉट अलाउड ट्रेडिशनली, इन द हाजी अली दरगाह की जब हम बात करते हैं, जब हम सबरीमला टेम्पल की बात करते हैं. मॉडर्नाइजिंग द सोसाइटी का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. जब हम जो एनिमल हैं उनके भी फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, काऊ की बात करते हैं, एंटी बीफ की हम बात करते हैं. जब हम बात करते हैं कि जली कट्टू और अलग अलग जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स में क्रूएलिटी होती है जानवरों के साथ वो सोसाइटी में ना हो, तब हम मॉडर्नाइजिंग की बात करते हैं. तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स. एंड प्रिजर्विंग द डेमोक्रेसी. फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करते हैं कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ द सोसाइटी है जहाँ पर पीपल आर सुप्रीम, दे remain ensured, they remain foundational principle over which the society governs. Now there is a demarcation. एक क्वेश्चन आपने भी एग्जांपल दिया अडल्ट्री का व्हेन यू वर एक्सप्लेनिंग फंडामेंटल राइट्स एंड मॉडर्निटी. तो आपने बोला अडल्ट्री इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट. इज इट सो? Yes, obviously. Adultery is a part of fundamental right. Yes. मानसी एग्जैक्टली नहीं कोई बोल सकता कि एडल्टरी पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट. राइट टू चूज योर पार्टनर इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट. That और is ये आर्टिकल different. 21 के अंदर में तो राइट टू चूज अ पार्टनर विद एडल्टरी हुआ ना कि आप इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इफ यू आर हैविंग अ रिलेशनशिप विद अदर पार्टनर देन इट इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट. और इसीलिए अगर एक ग्राउंड बनता है फॉर द डिवोर्स, इसलिए उसको डीक्रिमिनेशन करना चाहिए. ठीक है. So now there is a differentiation Continue, Prabhu. and human rights. And I may request my other partners also to raise the questions, and we'll be loving to deliver the answers. Fundamental rights and human rights. So fundamental rights are confined to the territory to which the Constitution is applicable. तो फंडामेंटल राइट जो है आप अपनी टेरिटरी के अंदर ही एंजॉय कर सकते हैं. जो इंडियंस को फंडामेंटल राइट दिए गए हैं वो आप इंडिया तक ही उनको फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं. आप ये नहीं कह सकते कि मैं यूएस में हूँ लेकिन हूँ तो मैं इंडियन सिटीजन और मेरे फंडामेंटल राइट जो मुझे इंडियन गवर्नमेंट दिए मैं वो यहाँ भी एंजॉय कर दूँ. दे आर पॉलिटिकली गारंटीड अंडर आर्टिकल 32 जिसमें आपके पास प्रोविजन होता है कि इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट गेट्स abrogated by the state, by the law, by the individual, he or she may visit the High Court in the very first instance, then the Supreme Court, and the Supreme Court as well as High Court under Article 2 to 6
use writs mechanisms to provide justice in case of gross violation of the fundamental rights. They are enforceable by court of law, as we just mentioned. They are not absolute because we have a reasonable restrictions on every fundamental right subject to public morality, law order, unity, integrity, and brotherhood. They are classified as those rights applicable to the citizens exclusively and those available to all persons. तो फंडामेंटल राइट्स में ही हमारे यहाँ पर मेंशन किया गया कि कौन से ऐसे राइट्स हैं जो ओनली फॉर सिटीजन हैं और कौन से ऐसे हैं जो दूसरे को भी मिल सकते हैं, यानी नॉन सिटीजन को भी मिल सकते हैं. तो आई थिंक 15, 16, 19, 20, 21 and 20, yes, these are the few rights which are only available to the citizens, and the rest are available to citizens also and to others also. Then if we talk about human rights, so they do not have geopolitical limitation, as we were talking about UNHCR, United Nations Human Charter Rights, that mentions about human rights. So they are not fundamental. When we talk about human rights, we talk about who actually deserve human rights. Do terrorists deserve human rights? Do serious criminals deserve human rights? When we talk about human rights violation by the paramilitary forces, when we talk about human rights violation within the jail, so do judiciary, do court entertain those appeals? So these kinds of questions arises in the front of judiciary. To which right give the supremacy, fundamental or the human rights? Then they are not having any political guarantee because they are not mentioned in any constitution, but slight mention of human rights we have in our Indian constitution in the form of fundamental rights. तो कुछ human rights जो बात है हमारे fundamental rights के अंदर ingrained है, intangible form के अंदर mention है. They are not enforceable. You cannot directly go to the court that my human rights is curtailed and you under Article 32 and 226 give us justice. It will not be entertained. They are more absolute, unlike fundamental rights. Now, what is the meaning? That human rights are absolute because human rights are talking about humanity rights. They are talking about the larger ethical principles which every human should possess, every government should provide, every individual should ensure with his co-partners. They are applicable to all men, irrespective of the citizenship. तो जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं वो सभी को प्रोवाइड होते हैं, उसमें सिटीजनशिप का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, एंड दे आर ब्रॉडर इन स्कोप as compared to the fundamental rights. So now we have few questions. Discuss the provisions of Human Rights Protection Act 1993 relating to the following. So definition of human rights. So we can elaborate that human rights are those rights which are given to uphold the larger humanity, to ensure that the basic rights should be provided to everyone, irrespective of the citizenship, irrespective of the criminal, civil backgrounds, irrespective of the country. Human rights are mentioned in the UNHCR Charter Rights, and every constitution of the world possesses some form of human rights in the form of the fundamental rights, like Indian Constitution Part-12. Then composition of NHRC. So NHRC is a statutory body and non-constitutional body which got established in the year 1993 in India, and it is comprised of three. It is comprised of three officials. One who headed. It's called chairman of the NHRC, and the appointment is done by the Prime Minister, leader of opposition, and CJI of the Supreme Court. You people may rectify this if I'm speaking something wrong. And the composition is done on the recommendation of a committee which is comprised of various other statutory and constitutional bodies chairpersons. Yes. The recommendation is given to the president by the committee comprising of, कैसे याद करना है, Prime Minister, Chairman, Speaker of Lok Sabha, Home Minister, then leaders of opposition of Raj Sabha and Lok Sabha, and Deputy Chairman of Raj Sabha. तो Speaker, Deputy Chairman of Raj Sabha और दोनों के leader of opposition of a Home Minister plus Prime Minister. ये और जो चेयरमैन होंगे NHRC के, ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रिटायर्ड, अभी कोई भी जज बन सकते हैं जो रिटायर्ड है.
और it also includes the National Commission, NCST, NCBC, NCSC, etc. बाकी उनके मेंबर भी होते हैं. Continue please. Then what are their functions? So number one, grievance redressal. Number two, formation of a report on the annual basis or on the short-term basis as the president may specify. Third, visit the jails and check the conditions of the inmates. Then prepare conduct seminars, sessions, support NGOs in the regards of human rights. Then dismissal. Other than that, yes, let me see 1 or 2.4. Then protect. It has only a civil power court, मतलब civil court का power रहता है इनके पास. It cannot enforce decision. Yes. Then represent the matter of human rights violation into the district to the top court and entertain the plea from various human rights bodies, commissions. Ensure the rights of sexual violence, LGBTQ community rights, and custodial torture and child labor. So these are the prominent features. So can we say that NHRC is a quasi-judicial body? Yes, it is a quasi-judicial body. Okay. Now, what Because it has the power of the civil court, that is why. तभी तो quasi-judicial है. What Yes. suggestions have been made for amending the act for making the role of NHRC effective? इसमें suggestions यही हैं कि सबसे पहला जो चेयरमैन है उसका टेन्योर बढ़ना चाहिए. दूसरा, जो अपॉइंटमेंट होती है वो फेयर होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए. बहुत टाइम पर ऐसा भी देखा जाता है कि चेयरमैन और जो बाकी ऑफिसर्स होते हैं उनकी वैकेंसी वैकेंट रहती है. स्टाफ बढ़ाना चाहिए. इसके साथ एनएचआरसी की जो सिविल पावर्स हैं उनको भी एनलार्ज करना चाहिए. फंडिंग एनएचआरसी की वो टाइम पर होनी चाहिए. जो रिसोर्स एलोकेशन है वो अच्छा होना चाहिए, बजटरी एलोकेशन जिसको हम बोलते हैं. और एनएचआरसी के जो भी गाइडेंस, जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं उनका रिटन असेंट या विदहोल्ड ऑफ असेंट होना चाहिए विद इन द पार्लियामेंट एंड प्रॉपरली स्टडी होनी चाहिए पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा. एनएचआरसी की जो सालाना रिपोर्ट होती है और उसके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं या फिर जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है उनको स्ट्रिक्टली एनफोर्समेंट भी करना चाहिए. तो इसके अलावा उसी आपके पास एक बस पॉइंट है आपके एडिशन में कि when NHRC is giving direction to the executive for implementing their measures, अगर वो बात नहीं मान रहे, they should give a written report कि why they are not following the procedure as mandated by NHRC. वैसा अभी नहीं होता. तो एक overall power बता सकते. When we say that it is a quasi-judicial body, it simply also means that it can take suo motu action. Suo motu action simply means that without asking from someone, it can directly interfere and interject the matters of the human rights violation. हिंदी में खुद से. I have one question. When we talk about ranking of the natural rights and fundamental rights, so how will you rank both of these? Ranking of? According to what? In terms of the importance, natural rights and fundamental rights. Number one, fundamental rights. Number two, natural rights. As simple. Okay. So the last question is discuss a proposition made by Supreme Court of India in the context of torture in the prisons and human dignity. तो इसे किसमें आप बताइए, फिर मैं बताता हूँ. तो डीके बासु गाइडलाइन बहुत prominent है. torture in prison and bail act provision है with respect to which because the under trial cases are there. 6,30,000 under trial है अभी. And proposition made by Supreme Court of India regarding torture. So guidelines such as webcam should be there, body cam should be there, in investigation and report should be made very transparent. ऐसा बोल सकते हैं for upholding the dignity. NHRC का रूल बढ़ना चाहिए इसमें with respect to that. Inspection by the higher authorities of the jail and also the police authorities. चलो मैं बता देता हूँ. इसमें सुप्रीम कोर्ट का प्रपोजिशन ये है कि कंटेक्स्ट ऑफ टॉर्चर एंड प्रिजन एंड ह्यूमन डिग्निटी. पहला तो ये कि जो भी इनमेट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आर्टिकल 21 इज इक्वली एप्लीकेबल ऑन टू देम. जब आप बात करते हैं आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो कन्विक्ट का अंडर ट्रायल का भी उतना ही अधिकार है. आप उनको टॉर्चर नहीं कर सकते. साइंटिफिक मैकेनिज्म से आप इन्वेस्टिगेट करिए. ये प्रिजन मैनुअल में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है. दूसरा ये प्रिजन मैनुअल को जो सेंट्रल गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के तहत बनाकर दे रही है, बिकॉज प्रिजन इज अ मैटर ऑफ स्टेट, तो आप उसका टाइमली इंप्लीमेंटेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट आप उसको करिए. तीसरा, आप जो
जेल अथॉरिटीज हैं उनके अंदर सेंसिटिव ऑफिसर्स लगाइए, ट्रेन्ड ऑफिसर्स लगाइए, स्किल्ड स्टाफ लगाइए, ताकि टॉर्चर जैसी जो चीजें हैं बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ एग्रेशन वो ना हो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बिहाफ पर अलग अलग कमेटियां हैं, जैसे हम बात करते हैं जैसे कृष्ण अय्यर कमेटी, मुल्ला कमेटी, जो कि प्रिजन रिफॉर्म्स के ऊपर है, वो आई। उन्होंने भी यही मेंशन किया कि जो टॉर्चर है वो कई कारणों से होता है, ह्यूमन डिग्निटी का वायलेशन देखा जाता है। पहला, ऑर्गेनाइज क्राइम्स होते हैं जेल के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, उनको कर्व करने के लिए आप टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। दूसरा, आप जो अंडर ट्रायल्स की प्रॉब्लम है उसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो एसडीएम होते हैं उनसे परमिशन लेकर के आप 24 बिल जो प्रोविजन है जिसको हम बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, उसके तहत आप उसको दिखाइए। अगर वो नहीं है, अगर वो बुक नहीं हो पा रहा है तो उसको रिलीज करिए। आप इनमेट्स ज्यादा मत बढ़ाइए। और दूसरा, तीसरा, यहाँ पर बात की जा रही है कि जो लिविंग कंडीशंस हैं विद इन द जेल्स उनको आप डिग्निफाइड तौर पे कीजिए। जब हम बात करते हैं जुवेनाइल जेल्स की, जब हम बात करते हैं तिहाड़ जैसे जेल की जो एशिया का लार्जेस्ट जेल है, वहां पर भी सेक्सुअल असॉल्ट के मामले आते हैं, तो ह्यूमन डिग्निटी का बहुत बड़ा एक वायलेशन है। तो वो ना हो तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए रिकमेंडेशन देता है सुप्रीम कोर्ट बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि वो स्टेट गवर्नमेंट को बोले कि प्रिजन मैनुअल को अपडेट कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए, टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। उसके साथ साथ जो स्टाफ है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर करना कि रिहैबिलिटेशन हो, वो रिहैबिलिटेशन तभी हो सकता है जब आप ट्रेंड स्टाफ, स्किल्ड स्टाफ वहां पर इंश्योर करेंगे। तो ये कुछ प्रोपोजिशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रिजन्स के अंदर जो टॉर्चर होता है उसको रोकने के लिए और ह्यूमन डिग्निटी को अपहोल्ड करने के लिए बात की है। और एक लास्ट चीज कि जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं ऑफ द आईपीएस, स्पेशली इन द पुलिस डिपार्टमेंट, दे शुड इंश्योर दैट द police staff which is working under their jurisdiction that remains sensitive to the prisons, and they should try to uphold the human dignity and the concept of human rights within the jail premises. Thank you. तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है NHRC, so it is a statutory body but a non-constitutional body. So now I have a question to you, Mansi and Oshik, that why it is a statutory but not a constitutional? Because Pravesh, I think there is one reason, because NCSC, NCST, NCBC, all these things, all these institution that are constitutional bodies work on specific areas. That is why NHRC is given the status of the statutory body, not constitutional body. This ऐसा बोल सकते is not the appropriate statement given by you. The reason being, okay, Mansi, you can speak. I would say कि initially I don't think so कि ये ज़्यादा important area था of human rights protection. Gradually when we saw challenges coming up regarding the protection of human rights, so then we came up with a law which would be, again जैसे अभी औशिक ने बोला कि it is more wider in terms of the ambit areas जिसमें NHRC deal कर सकता है. The only basic thing that why it is not a constitutional body, that when the constitution was framed, it was not mentioned. This is number one thing. Number two, it is today also not mentioned in the constitution. It is made upon the parliamentary law. That is why it is a statutory and non-constitutional body. When you are saying that it is dealing with the ambiguity, it is inappropriate to say, because human rights, it is talking about the fundamental rights. It is talking about those rights given to Pravesh, बोला कि one question. कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि लॉ एग्जिस्ट करता है, पर ये रीजन तो नहीं हुआ ना, क्योंकि पहले क्यों नहीं, फिर वो तो हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके भी इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना सकते थे, पर हम लॉ ही क्यों लेके आए? because the UNHCR charter which we talk, that also suggested every country during this time, and particularly India during this time, and then under the compulsion of that we framed this act in the Indian Parliament and made this non-constitutional body as NHRC. Yes, Hoshik. हाँ, मेरा एक और क्वेश्चन है कि NCBC, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, it was given a statutory provision in 2018-19. I think it was given a constitutional status by the amendment of the constitution. 2018 it is हाँ, made a 2018. True. yes. Then हाँ, why NHRC still have not given the status of the constitutional body? तो ये क्वेश्चन आपसे है कि अभी क्यों नहीं हुआ? अगर पहले नहीं हुआ तो बाद में तो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ. okay.
backward commission which you are talking about, NCBC, it is made a constitutional body. Earlier it was a statutory body, non-constitutional body, I agree. That depends on the will of the parliament. Parliament made that non-constitutional body into a constitutional body. If let's suppose tomorrow parliament say that human rights violations are not getting stopped because of the non-constitutional status of the NHRC, definitely they can go ahead. They can make this constitutional body by amending the constitution under Article 368. It can be done. Okay, Pravesh. Continue. पॉलिटिकल विल, बट ये भी है कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट से ज्यादा क्वेश्चन होंगे और क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चंस रेज होंगे, शायद ये रीजन भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए तो नहीं करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसका, अदरवाइज तो हो जाता। तो यहाँ पर प्रोविजन है कि 1993 में बिल आया और 2005 में इसको पेश किया गया। और अभी हम देखते हैं कि इन द सेंट्रल लेवल वी हैव NHRC एंड इन द स्टेट लेवल वी हैव SHRC, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो उनका भी कॉम्पोजिशन उतना ही होता है। और अभी 28 में एक अमेंडमेंट आया इस एक्ट के अंदर जिसमें बात की कि अगर रिटायर्ड CJI नहीं है देन द ऑप्शन इज टू अपॉइंट अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज एट NHRC चेयरपर्सन। यानी पहले ये प्रोविजन था कि सिर्फ रिटायर्ड CJI ही जो है वो चेयरपर्सन बनेंगे NHRC के, लेकिन अभी ये है कि अगर रिटायर्ड है ही नहीं, इन केस उनका डिमाइज हो गया, इन केस वो कहीं और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हैं, इन केस वो नहीं आना चाहते हैं, तो वो वैकेंट रहती थी सीट। तो अभी ये बोला गया कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, तो 33 जजेस में से कोई भी जज हो रिटायर, उनको जो है आप अपॉइंट कर दीजिए चेयरपर्सन। और मोर लॉज के अंदर जो है NHRC डील कर सकता है ताकि उसको ज्यादा टीथ मिले ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को पब्लिक सिनेरियो में लाने का। Amy said, okay. And two important things here that the numbers of members in the commission are increased from 2 to 3, जिनके अंदर एक जो है वो हमारी वुमेन होंगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है into such bodies is also getting increased. And the amendment to the Protection Act will make NHRC, SHRC compliant with the Paris Principles concerning its autonomy, independence, pluralism and wide-ranging functions, ताकि ह्यूमन राइट्स प्रमोट हो सके और ह्यूमन राइट अपहोल्ड हो सके इंडिया जैसी सोसाइटी में, जिसको हम बोलते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड द वास्ट डाइवर्स कंट्री, मल्टीकल्चरल कंट्री जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स को एंटरटेन किया भी जाता है और to the maximum extent they are upholded also in the form of when we talk about we have the independent judiciary. So today this much we have covered, and thank you so much. We'll meet tomorrow with the future course of fundamental rights, which we'll see in the part 3 of Indian Constitution. So stay tuned with NHRC and keep watching. Thank you so much.